Welcome back to Make Mechatronics. So we are again back with our home automation project. Okay. So we had named it earlier, right? Why this does that happen? I don't know. It was home automation system. पहला नाम लिखा था यार मेरे हिसाब से. Yes, when it was not executing na, so I copy pasted it into another new project in hope of something might have got wrong with the Tinkercad only. So that's why. No worries now. It's executing. So इस वीडियो में हम लोगों को कोड कंप्लीट करना है इसको. So we will quickly do that. Okay. So where are we at? We have to interface the not interface include the buzzer and the buzzer lamp motor and button into the code. ये सब चीज़ें हम लोगों ने कोड में ऐड नहीं की है. वेरिएबल्स ऐड कर दिए सबके सब, पिन मोड्स ऐड कर दिए सबके लिए, वही लूप में फंक्शन ऐड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे, दूसरा एक टैब खोलेंगे. उस टैब में हम लिखेंगे TMP26 विच इज़ अ टेम्परेचर सेंसर. formula to convert TMP26 sensor formula. TMP36 it was, I don't remember, that's why I write. Okay, so it's giving corrected up to correctly and it is between 2.7 and 5.5 volts, so don't try to use a 9 volt battery. We have not used a 9 volt battery. What is the formula? Voltage at pin in millivolts reading from ADC. Voltage at pin in millivolts reading from ADC multiplied by 5000 divided by 1024. Now what is this? I'll explain you what is this in a minute. Let me switch to my pen tablet mode now. अब ADC की मैंने बात की थी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ना, उसमें लेवल्स की बात की थी. हमारे कितने लेवल्स होते हैं? 0 से लेके 1023, सॉरी 1023 नॉट 1200. एनीवेज 0 to 1023. Now 0 signifies 0 volts and 1000 signifies 5 volts. So it's not like कि अगर 0 है तो 0 होगा, देन एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जिस पे 1 हो जाएगा, राइट? तो ये हम लोगों ने लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, तो हम लोगों ने उनको लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कितने लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 0 से 1023 मतलब 1024 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, विच इज़ ऑल्सो 2 to the power of 10. दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग, ये ADC को हम क्या बोलते हैं? 10 बिट ADC. ठीक है, 10 bit ADC. Those of you who know binary a little bit, you would understand what is it. Okay, although it's not relevant right now. So हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू समझ लो 236 आया, अभी मैंने पिन से रीड कर रहा हूँ तो 236 आ रहा है, तो 236 का मतलब कितना वोल्ट है? 0.3, 0.345, 0.4, कितना वोल्ट है उसका मतलब, उस वैल्यू का मतलब क्या है, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट दैट? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1. हाउ वुड यू कैलकुलेट? अब मेरे पास 5 वोल्ट है, देखो 5 वोल्ट को किसने में डिवाइड करना है? 1024. क्या आएगा वैल्यू? लेट्स यूज आवर कैलकुलेटर, isn't it? We want to divide 5 divided by 1024, which comes out to be 0.0048. Okay, or I can say 49. Okay, so अगर 0.0049 वोल्ट्स आ रहा होगा तो वैल्यू आएगी 1. अगर 0. ये ऑलमोस्ट 0.05 हो गया, राइट? तो 0.05 कर देते हैं. ओके, 0.005. तो मतलब अगर 0.005 वोल्ट्स आ रहा होगा तो वैल्यू आएगी 1. अगर 0.01 आ रहा होगा तो वैल्यू 10 आ रहा होगा तो वैल्यू हो जाएगी 2. एंड अगर 0.015 आ रहा होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3. लाइक दिस वैल्यू विल इंक्रीज अप टू
5.00 वोल्ट्स, जो कि होगी वैल्यू 1023, राइट। तो मतलब 0.5 से लेके 0.10 तक, मतलब 0.006, 0.007, ये कितने, इन सारे वोल्ट्स में वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, राइट। अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कि कितने की 1 का वैल्यू क्या है, मतलब जो 1, अगर वहाँ पे 1 रीडिंग आ रही है एनालॉग में, एंड एडीसी में अगर रीडिंग 1 आ रही है, उसकी वैल्यू आती है 0.005 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब अगर 236 आ रही है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, we just multiply it, right? We just multiply it with 0.005, isn't it? Or in normal case we multiply 236 multiplied by 5 divided by 1024, isn't it? Right? Okay. So, इतना हम करेंगे अभी क्विकली, ओके। ये वाला फॉर्मूला है 236 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1024, यही फॉर्मूला वो वेबसाइट पे लिखा हुआ था, अभी जो वेबसाइट देखी ना हमने, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 की जगह पे 5000 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू 5000 मिली वोल्ट्स, ओके। ये वोल्टेज एट पेन इन मिली वोल्ट्स, मतलब ये उस समय, वैसे अगर हम लोग 5 लिखेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा, 5 लिखेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा, 5 वोल्ट्स में कैलकुलेट होगा, मतलब अगर समझ लो 512 आ रहा है तो 512 करस्पॉन्ड्स टू हाफ रीडिंग, राइट। तो हाफ रीडिंग कितना होगा, 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 वोल्ट्स, ठीक है। बट वही अगर मैं 5000 लिख दूँ तो 2500 मिली वोल्ट्स आएगा। तो जस्ट ये रीडिंग मिली वोल्ट्स के लिए वहाँ पे 5 की जगह 5000 लिख दिया, नथिंग एल्स। तो दिस इज अ फॉर्मूला we would use to convert the analog ADC value to volts, कि कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं हम लोग को टेम्परेचर सेंसर से, अंडरस्टूड। नाउ वोल्ट्स मिलने के बाद क्या करना है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ओके, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एनालॉग वोल्टेज इन मिली वोल्ट माइनस 500 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें वहाँ पे लिखना है, तो लेट्स डू दिस। सो वी वुड नीड समथिंग ऑफ अ लोकल वेरिएबल, वुड नीड टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या रखें, फ्लोट रखें कि क्या रखें, हमें टेम्परेचर को कहाँ प्रिंट करना है, एलसीडी प्रिंट करना है, तो फ्लोट ही रखते हैं। फ्लोट टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर नहीं लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस, ओके, डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ओके। नाउ डी सेल लिखते हैं, डी सेल। सेल्सियस इतना बड़ा बड़ा और आई और यू को मिसप्लेस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो डी सेल लिखा इज इक्वल्स टू, कितना था डी सेल की वैल्यू, ओके। सो डी सेल की वैल्यू ओरिजिनली कितनी थी, डी सेल की वैल्यू कैलकुलेट, पहले वोल्ट्स कैलकुलेट करना है, इज़ इट, पहले वोल्ट्स कैलकुलेट करते हैं, पहले वोल्ट्स कैलकुलेट करते हैं। वोल्ट्स का क्या फॉर्मूला था, जो रीडिंग आ रही है, मतलब जो टेम्परेचर सेंसर से जो रीडिंग आ रही है वो क्या है हमारी, टेम्प अंडरस्कोर वैल। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 1024। व्हाट दिस विल डू, ये हमें, ये डी सेल में क्या सेव करेगा, डी सेल में ये सेव कर देगा कितने मिली वोल्ट्स रीड हो रहे हैं टेम्परेचर सेंसर से। अब उस मिली वोल्ट्स के लिए फिर से डी सेल इज इक्वल्स टू डी सेल माइनस 500 divided by 10. Let me just confirm this was the formula only. Yes, this was the formula. ठीक है। तो डीसेल में पहले हम लोगों ने मिली वोल्ट स्टोर किया, उसके बाद फिर डीसेल में से 500 माइनस किया, उसको डिवाइड बाई 10 किया, और जो नई वैल्यू आई उसको भी डीसेल में स्टोर कर दिया, तो डीसेल हमारा टेम्परेचर बन गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो टेम्परेचर स्टोर कर रहे थे, टेम्प वैल को डिस्प्ले कर रहे थे, टेम्प वैल की जगह हम यहाँ पे डीसेल को डिस्प्ले करेंगे, एंड लेट्स सी इफ़ वी आर करेक्ट और नॉट। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई देगा कितना टेम्परेचर जा रहे हैं, और वही टेम्परेचर अगर यहाँ पे भी आ रहा है, देन आर फॉर्मूला इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट द सिमुलेशन एंड चेक द वैल्यूज।
Okay, we're getting temperature is 11.2. टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस. That is not even close to accurate. Okay, so 51 degree Celsius. Now I'm getting 32 degree Celsius. What is the difference between 32 and 51? Difference between 51 minus 32, which is 19, and let's take another number 88. For 88 I'm getting 63, which is 3.6. So 88 minus 63, 25. So difference is also increasing. Difference is also not constant. Something of a mistake has happened. A1. Temperature is in A1. Okay, good. It's in A1. It's connected to the Arduino. The name of the sensor is TMP36 only. It was not 2636 only. Analog voltage in millivolts minus 500 and then divided by 10. So I have also written brackets, right? Then divided by 10. It was minus only, no? Yes, it was minus only. Initially for the millivolts 5000 by 1024 multiplied by reading from ADC. Reading from ADC is temp val only. Everything seems good. Then also why not we are getting the actual value of the sensor. Let's see somewhere else if we find something different. TMP36 formula. I know formula spelling is wrong, I know. Hundred volts. Excuse me. V minus 0.5, where V is in volts. 100. What is this? Okay. 100 multiplied by V minus 0.5. It is similar to what we have now. We have just done the calculation in terms of millivolts. Let's do in terms of volts. 5 and then 0.5 and then multiplied by 100. Let's see if that works. Okay. We're getting temperature as minus 50 for 25 degrees. Awesome. Awesome. Superb awesome. At least. Okay. So we're not getting a actual formula, or might be some issue with that sensor, or okay. Let's try to get as close as we can using the same earlier formula.
I'm getting 21.2, which is very, very close, right? Increase the value. Increase the value means increase the numerator. How to increase the numerator? Decrease the value you are subtracting from it. So let's set it to 370 now. It's a simulation. We can't accept at most what I can say accuracy from it. So whatever we got, we have to work with it. So we are now 24.2. So let's decrease it a very little bit only. 60. For 25 we are getting. For 25 we are getting 25.2. So we're getting a little bit more now. So let's stick for say 65. That's how you tune the formula. Something happened again. Let me just refresh it. We were at 365, right? We will type 365 now. So we need to type here 365 and then start the simulation. Okay. So now we are getting 24.7. So we want a little towards 60. So let's say 362. Yes. Now see. Now we're getting exactly 25 degrees Celsius. Now let's check for other temperature and other values. For 74 we are getting 66.2. Okay. For 45 we are getting 41.4. Not bad. For 113 we are getting 97. What temperature we want to measure is around 28, right? So around 28, 32, 31 we are getting 30.2, which is fine. Okay, and 26, 28, 29 we are getting 29.4. Okay, fine. We are able to measure what we want. Okay, so when the temperature will be 29, it will show 29. So let's stop at this only. So for temperature sensor we have calculated the temperature. Let's zoom out. Okay, so temperature sensor work we have done. Okay, quickly we will do everything else now, quickly, with no delay. Temperature we have calculated, light we have done. So what is left now is to sound the buzzer or turn on the light and turn on the fan, isn't it? Yes. So just where should I write that? Here only. If TEMP, no, not TEMP, DCEL is greater than how much? 28 degrees Celsius, then I want to digital write digital write S pin, comma 1. Okay, then I will write else copy this, else fan will be off.
else fan will be off, right? Similarly, I will do this again for the if LDR val is greater than say 300, then is is smaller than 300. An LDR value is smaller than 300, then I want to turn on the lamp. So L pin will be 1. Otherwise, L pin will be 0. Okay, so that was about the LDR valve. Control C, enter. Now we have soil valve. Soil valve is what is the value of soil valve? Soil valve we are getting around we are getting at maximum we are getting 700, and let's stick with 400. So if the soil moisture, sorry, let's stick with 300 only. If soil moisture is less than 300, okay, then we want to switch on the buzz pin. Buzz pin 1. Otherwise, buzz pin will be 0. Okay, and I have decreased the sound value of the desktop so that it won't be annoying as much. No, we don't want to just switch on the buzz pin. No, 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 no. We want to put tone buzz pin, comma, around 3000 hertz, comma, for around for around 500 milliseconds. Okay. This was not will be in else. This will be in. This will be in here. No tone. No tone. Buzz pin. Okay, good to go. So buzz pin is done. Soil value is smaller than 300. Tone, buzz pin 300, 500. Good. Okay. I've not measured one thing. BTN. We have not created one thing only. BTN val I have not created. Button val. BTN val. BTN val is equals to digital read BTN. Okay, and if button is pressed, then also same thing. So when the button will be pressed, it will be equals to 1, right? So BTN val will be equals to 1, then tone the buzzer, else no tone. So button is done, soil sensor is done, temperature sensor is done, LDR sensor is done, fan, motor, fan, lamp, motor, lamp, and okay, sorry for that. So now everything is done. So we just have to write everything, write every value on the LCD, okay, after a particular delay. Or let's not write anything on the LCD. What is the LCD used for then? Yes, we have to write the values of the LCD on the LCD. It will take a bit long, but we should write it. Now
For writing on the LCD, we need set cursor and print command. So LCD dot set cursor 0 0 LCD dot print first temperature. We just print temperature only in the LCD. What will happen ना कि if अगर मैं सब कुछ प्रिंट करता हूँ LCD पे तो I have to give a day. होगा क्या ना कि अगर मैं टेम्परेचर के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी प्रिंट करता हूँ तो आई हैव टू गिव डिले बिटवीन दैम, तो उसके वजह से क्या होगा, डिले बहुत बड़ा हो जाएगा. एंड अगर मैं समझ लो बटन प्रेस किया एंड अभी कुछ प्रिंट हो रहा है तो वो बटन प्रेस कब एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर 2 और 3 सेकेंड्स. उसी के लिए हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रिंट करते हैं. ओके, सो इट विल बी मच बेटर. एंड अगर बाकी सब कुछ भी प्रिंट करना है, अगर आप इफ़ यू वांट टू प्रिंट एवरीथिंग एल्स देन इट्स ऑल्सो फाइन, नो वरीज, you can print it. You guys know enough now to edit the code yourself, right? Okay, so let's अभी वापस एक सर सेट करने की ज़रूरत नहीं है. टेम्परेचर के जस्ट हम लोग बाद इमीडिएटली आफ्टर द टेम्परेचर वी कैन प्रिंट द टेम्परेचर. थोड़ा सा टेम्परेचर के बाद स्पेस दे देते हैं एंड देन उसके आगे क्या लिखते हैं, DCEL एंड देन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो लिखना है ना, डिग्री सेल्सियस भी लिखना है लास्ट में. तो लास्ट स्टार्टिंग में टेम्परेचर एज अ स्ट्रिंग जाएगा, फिर ये वैल्यू जाएगी, फिर वापस से डिग्री सेल्सियस. तो डिग्री सेल्सियस कहाँ से लाएंगे अब हम, उस तो कीबोर्ड में तो होता नहीं है. सो लेट्स गो टू गूगल ओनली एंड राइट डिग्री सेल्सियस. I don't know. I know the spelling is wrong. I just want to copy this now. Just wanted to copy this. ये क्या हुआ? What happened right just now? Okay. Think we are done with it. Okay, so we are continuously printing the temperature because that's the actual value we can print. Other than that, every other value is what, between 0 to 1 2023. Okay, because the unit of light intensity is lumens and we don't have the accurate formula to convert LDI value into lumens. Similarly for the moisture also, percentage, we can convert it into percentage, but let's leave it at that only. So let's see if our code is working properly or not. We have an error in void loop. Digital write was not defined in this scope. 15th. Digital write. What is the problem with digital write? Okay, digital write. It's not digicial write. Okay, my bad. And I cannot edit it also. This is a bug happening so many times, like कि सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है एंड देन ऑल्सो आफ्टर दैट जो एरर्स हैं उनको मैं एडिट भी नहीं कर पाता हूँ बिकॉज वो इनिशलाइजिंग फेज में अटक गया है. दे शुड सॉल्व दिस बग. एनीवेज, where was it? Digital write, digital write, digital write, digital write. Okay, other than that there's nowhere digital write is there. Okay, start the simulation. One more error. Oh,
It's digital, right? Not digital, right? Don't do spelling mistakes. Now it's working. Okay, welcome to our home automation projects. Very good. Welcome, welcome. Temperature is 25. Temperature is set to 25. Very good. So let's increase the temperature. Okay, and light intensity is, okay, light intensity is so dark. If I increase the light intensity and it goes beyond, okay, it's good beyond 300. So now the lamp is off. If light intensity is smaller than 300, lamp is on. Similarly, if temperature goes beyond, say this here, see the fan is on, the motor starts spinning. And if the temperature is 34 now, now it's 22, the fan will stop, fan stop. See, all of it is working. Similarly, if I try to control the, hey, the buzzer should buzz, na? The buzzer should be buzzing right now. Should be buzzing, because the value of, let me check in the serial monitor. The value of soil moisture sensor is 1, literally 1. What I have written, the soil moisture sensor value is smaller than 300, then tone buzz pin 3000 hertz for 500 milliseconds. Then else no tone. Soil level is less than 300, no? Then why it's not buzzing? Okay, now that's weird. Let's remove this else part from here. Then also it's not buzzing. Buzz pin is connected to 6. Is it connected to 6? Yes, it is connected to 6. Let's connect it somewhere else, like pin number 6 is the best here. I guess tone function works on 9 and 10 only, maybe. So let's free up pin number 9, which is for fan pin. Fan pin is now pin number 7, and buzz pin is now pin number 9. Let's do these changes in the code. New buzz pin is pin number 9, and new fan pin is pin number 7. Let's start the simulation. Welcome and all. Home automation project. Temperature is this. Soil moisture is 0. And still buzzer is not buzzing. LED is off, lamp is off. If I increase the temperature, 43, the fan is on, motor is on. This all of this is working. If I click on the button, that is also working. If I click on the button, then it's working. But the soil val is not working. When soil val is less than 300. Right now, soil val is, I don't know what is happening. It's very weird because अभी अगर देखें हम लोग को soil button val अगर जब 1 हो रहा है, okay, soil moisture sensor, soil val, I'm printing soil val right here. If soil val is less than 300,
tone buzz pin will buzz. Okay, then what is the issue? Okay, ये टेम्परेचर भी जो है हमें नेक्स्ट वाले में प्रिंट करना चाहिए. सो प्रिंट इन द नेक्स्ट रो, ये प्रॉपरली आएगा. के बस पिन का क्या इशू आ रहा है? टोन बस पिन 300. Let's say soil val is greater than 300, then soil val is greater than 300, then not buzzing. I don't know how annoying it is, but I will reduce the sound bit more. Using the button I am able to control the buzzer, okay, but using the okay, so after doing so much of debugging, there was a problem which was not in the code. The thing is that जब हम टोन फंक्शन यूज़ करते हैं तब हमें उसके बाद थोड़ा सा डिले देना होता है. इफ़ स्टेटमेंट के अंदर टोन फंक्शन जब हम यूज़ कर रहे थे एंड सिंगल लाइनर वो भी, तो कैसा रहा था कि उसको टोन फंक्शन को टाइम नहीं मिल रहा था काम करने का. इंस्टेड ऑफ जब हम बटन प्रेस कर रहे थे तो हम बटन बहुत देर तक प्रेस करके रख रहे थे, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि बार बार वो टोन फंक्शन मतलब बेसिकली उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा था टोन फंक्शन को रन होने के लिए. तो इट्स काइंड ऑफ अ रन टाइप एरर, ठीक है. उसको सॉल्व करने के लिए मैंने बस एक सीरियल कमांड डाल दिया ताकि उसको एक इनफ टाइम मिल जाए टूल फंक्शन को रन करने के लिए, ठीक है. तो जितनी बार भी अगर टेम्परेचर सॉइल मॉइस्चर कम हो गया 300 से, नाइस सॉइल मॉइस्चर 245, तो सॉइल बार बार लिख के आ रहा है एंड वो रन भी हो रहा है. ओके, एंड व्हेन आई प्रेस द बटन तभी भी रन हो गया. ओके इनफ. ओके, that is enough annoyance for one day from a buzzer, ठीक है. So now our project is working. Okay, we are able to control the fan and lamp automatically with the help of sensors. Okay, this is our home automation system. We have automated the fan and the light and the buzzer from the soil sensor, also displayed everything on the LCD. So I enjoyed this series, making this series very much. Okay, it was great to make all of these videos. I hope you have learned something, you have enjoyed the complete series. If you want me to make series on something else, some other projects, please do tell me in the comments below. Happy journey from here onwards. Okay, keep learning, keep exploring. I hope you have enjoyed it. See you in my next video, whatever it will be. Thank you. Bye bye.